ठीक है. You know that light propagates in the small packets of energy called as photon. तो पहला वाला फॉर्मूला जो अपने को याद रखना है, एनर्जी ऑफ फोटोन E is equals to your H into your F r frequency nu. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा, hc divided by lambda. सभी लोग लिख लीजिए, isn't it? The first formula in the dual nature of matter is energy of your photon, because light propagates in the small packets of energy called photon as per the Planck's hypothesis. So each photon have energy of E is equals to hf or it is hc by lambda. और रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है बेटा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू 0. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0. नेक्स्ट वन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, बोल लीजिए, मोमेंटम ऑफ फोटोन, momentum of photon will be equal to your h nu divided by c, or it is nothing but of your hc divided by lambda. ठीक है ना, hc divided by lambda. Frequency is v is equals to your n into lambda, or c is equals to your n into lambda. Here momentum of the photon will be equal to your h nu divided by c, or it is equals to your h by lambda, h by lambda. Done. Number of photons कैसे निकालते हैं बेटा, number of photons emitted per second, I'm representing it by capital N. N is equals to your P divided by hc divided by lambda. Number of photons is equals to your P divided by hc divided by lambda. Clear? Sure. Next one is photoelectric effect. Emission of electrons from the metal surface is called as photoelectric effect बेटा. तो फॉर्मूला क्या था, energy is equals to your work function plus of your maximum kinetic energy. यस, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h into your f is equals to your h into your f naught plus half into m into your v max square. And it is also written as of your hc divided by lambda is equals to hc divided by lambda naught plus this will be equal to half into m into v max square in terms of wavelength. ठीक है ना, is it clear? सो जैसे जैसे इंक्रीज होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा. तो वैसे वैसे भी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो इंक्रीजिंग एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम. काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स इज सेम. ये पॉइंट याद रखना है बेटा. अगर इंटेंसिटी बढ़ी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, इट आल्सो इंक्रीजेस, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमेनिंग फॉर मी द सेम. With increase in frequency, अगर frequency increase हो रही है on an incident light, photoelectric current will not change. Photoelectric current will not change. ये बात याद रख लीजिए, will not change. क्या चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीज नहीं होगी. इतना आपने को बेसिक याद रहना चाहिए. The next one is about your de Broglie's wavelength. De Broglie's wavelength. De Broglie's wavelength. If a particle of mass m is moving with the speed v beta, then lambda is equals to what beta? Lambda is equals to your h divided by m into v. De Broglie's wavelength. So as per the de Broglie's wavelength, lambda is equals to h by m into v. Or else अगर हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स पे लिख रहे हैं तो it is your h divided by under root of your 2m into your kinetic energy भी लिख सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चार्ज इनटू योर पोटेंशियल भी होता है. तो लैम्बडा इज आल्सो इक्वल टू योर h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ योर 2 into your m into चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन into पोटेंशियल. क्लियर है, in terms of your mass, charge and potential, in terms of your charge, mass and as well as of your potential. क्लियर है सभी को, इतने बेसिक फॉर्मूले से बेटा अपने को याद रखने के लिए. आया सभी को यहाँ तक, कोई डाउट?
हाँ लिख लीजिए बेटा। Energy of photon is hc by lambda. Momentum of photon is h into nu, or it is h by lambda. Number of photons is p divided by h lambda. Energy of the photoelectric effect is E is equals to work function plus of this much. Or else if I'm writing this one as h into your hf naught, ऐसा भी लिख सकते हो, या it may be or in terms of wavelength. This will be the relation. यहाँ पर ये पॉइंट अपने भी याद रखना है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इंटेंसिटी बढ़ी तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन सेम, whereas as the frequency increases photoelectric current will not change but kinetic energy will increase. उसके बाद de Broglie's wavelength lambda is equals to h by mv, or it is h divided by under root of 2m into kinetic energy. Kinetic energy is equals to charge into potential, and lambda is equals to h divided by under root of your 2m into q into v. हो गया सभी को? चलिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन बेटा, सभी लोग ट्राई करिए बेटा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function. आज आप लोग पीवाईक्यू कंप्लीट कर लीजिए बेटा इस टॉपिक का किसी हाल में भी। इफ m is mass of photoelectron, if m is mass of your photoelectron, comma de Broglie wavelength is lambda naught, then first option, de Broglie wavelength is equals to 2m into c divided by h into your h is lambda square. Second option is lambda is equals to your 2mc divided by h into your lambda naught square. Third one is lambda is equals to your 2h divided by mc into your lambda d square. And fourth option is like it is below, lambda is equals to your 2m divided by hc into lambda naught square. An electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work done. If m is the mass of the photoelectrons emitted from the surface and the Broglie wavelength is lambda naught, then what is the lambda and lambda naught का relation? एक मिनट का टाइम है आपके पास। ये अपना मेटल सरफेस है, electromagnetic wavelength of lambda इस पे इंसिडेंट हुई है, एंड फ्रॉम नेग्लिजिबल मास ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ से अभी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है जिसका मास है m, और de Broglie wavelength is given as lambda naught. ये जो निकला है इसका वेवलेंथ है lambda naught, इन दोनों के बीच में का रिलेशन। Maxwell's photoelectric equation लगा लीजिए बेटा, hc divided by lambda is equals to your maximum kinetic energy plus of your work function, and here hc by lambda will be equal to how much बेटा, k max, ठीक है। क्यों k max बताइए? उसने बोला photoelectric surface of negligible work done, it's not work done, sorry, it's work function.
नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, यानी वर्क फंक्शन ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो गया, ठीक है ना। चलो, तो लैम्बडा नॉट विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, लैम्बडा नॉट विल बी इक्वल टू योर h डिवाइडेड बाय, this will be equal to your under root of your 2 into your m into your maximum kinetic energy, यानी k max will be equal to h square divided by 2m into your ये बाहर चले गया तो this will be equal to lambda naught square। k max की वैल्यू कितनी होती है बेटा, h c by lambda, h c by lambda is equals to your h square divided by 2m into lambda naught square, ये h square चले गया, anything is getting cancelled, nothing, so lambda value will be equal to how much from this one, so lambda is equals to your 2m c उधर चले जाएंगे, isn't it, divided by your h इधर आ जाएगा into your lambda naught square आ गया, so this will be the answer, lambda is equals to 2mc lambda naught square divided by h into lambda, ये तो अपने को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से आया बेटा, उसने प्रॉब्लम में बोला कि नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन 0 हो गया, यानी hc by lambda is k max। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ कैसे लिखते हैं बेटा, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इज लैम्बडा नॉट इज इक्वल्स टू h by मोमेंटम, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, ये डी ब्रोगलीज वेवलेंथ है, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्बडा नॉट इज इक्वल्स टू h by your मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2m into काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें मैंने k max बाहर निकाला स्क्वायर करके, k max is equals to h square divided by 2m into lambda naught square, k max की वैल्यू यहाँ पर है ऑलरेडी मेरे पास, ये वैल्यू लेके आके यहाँ पर डाल दिया मैंने, कीप दैट वैल्यू हियर राइट नाउ and simplified, so you're getting lambda is equals to this much। आया ये बात समझ में सभी को, is it clear for everyone? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the energy required, the energy required to break one bond in DNA is 10 power minus 20 joules, okay, so I need this value in electron volt, this value in electron volt is in need 20 का क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करिए, ऑप्शंस आर 0.6, 0.06, 0.006 and 6। Energy required to break one bond in DNA, energy already दे रखा है, देखो बेटा, energy is given how much for me, energy is equals to 10 power minus 20 joules, and you know unit of energy is electron volt, unit of energy, this is unit of energy is electron volt, and you know that 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 to the power of minus 19 joules, so therefore 1 joule will be equal to how much, 1 joule will be equal to 1 electron volt divided by 1.6 into 10 to the power of minus 19, clear है, so I can write this energy E is equals to 10 power minus 20 into joule will be equal to 1 electron volt divided by 1.6 into 10 to the power of minus 19। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ रहा है देख लीजिए, ये कितना आ जाएगा बेटा, 10 पावर माइनस 20 इंटू 10 पावर प्लस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 20 प्लस 19 कितना होगा, आंसर बी, वेरी गुड, बी विल बी द आंसर बेटा, 0.06 आया सभी को, माइनस 20 प्लस 19 कितना होगा, आया सभी को,
डन बेटा, सभी लोग आंसर दे रहा बेटा, एक ही जने दे रहे, मिर्जा 2। हाँ, ये कितना आ रहा बेटा, 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 1.6। 1.6 मतलब कितना बेटा, सो इट इज 1/1.6 यानी 16 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 1/10, ये 10 ये 10 चले गया, सो इट इज 1/16। सो 1 डिवाइडेड बाई 16 कितना होता है बेटा, 1 divided by 16 is 0.0625 approximately, यानी 0.06 ले सकता हूं। So second option will be the answer. आ गया सभी को, is it clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The de Broglie wavelength, the de Broglie wavelength of an electron moving with kinetic energy of 144 electron volt is nearly 144 electron volt is nearly, ऑप्शन दे रहा हूं उसके, 102 into 10 power minus 4 nanometers. Second option is 102 into 10 power minus 5 nanometers. Third option is 102 into 10 power minus 2 nanometers. Fourth one is 102 into 10 power minus 3 nanometers. The de Broglie wavelength of electron moving with kinetic energy of 144 electron volt is nearly how much? Kinetic energy is given as how much beta? 144 electron volt. इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? E into V is also equal to 144 electron volt. De Broglie's wavelength का formula, lambda is equals to h divided by under root of your 2m into your kinetic energy. इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 6.67 into 10 to the power of minus, स्ट्रक हो रहा है। चलो जल्दी करके बताइए। आया किसी को? पहले साल की कर लीजिए बेटा। 6.6 into 10 to the power of, ये कितना होता है बेटा? -34 divided by under root of your 2 into mass of electron. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखा है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री कितना आता है आप लोगों को? 9.1 into 10 to the power of -31
into electron volt is given in terms of what? 144. 144 electron volt wavelength is 1 electron volt will be 1.6 into 10 to the power of minus 19. इसको calculate कर लीजिए, it will give me the answer. Very good. ठीक है, I'm leaving the calculation for you. You just try to see the calculation and let me know the answer. Done? Sure. Next question. An electron is accelerated through a potential difference of 10,000 volt. Its de Broglie wavelength is चलिए बताइए. Options are 12.2 into 10 to the power of minus 13 meters. First option. Second option is 12.2 into 10 to the power of minus 12 meters. Third one is 12.2 into 10 to the power of minus 14 meters. Fourth one is 12.2 nanometers. An electron is accelerated through a potential difference of your 10,000 volts. मैंने आप लोगों को de Broglie wavelength in terms of potential लिखवाया था डायरेक्टली 12.27 divided by root of your v. ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए डायरेक्टली. It is 12.27 divided by ये होता है in terms of angstroms बेटा. 1 angstrom will be equal to 10 to the power of minus 10 meters divided by ये हो गया root of 10,000. 2. सेकंड ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, देख लेता है. 12.2 into 10 to the power of 27. ये तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है बेटा. रूट ऑफ 10,000 मतलब क्या? 10 पावर 4. 10 पावर 4 मतलब ये 12.27 डिवाइडेड बाय 10 पावर 2 into 10 पावर minus 10. ये ऊपर चले जाएगा 12.27 into 10 to the power of minus 10. ये हो जाएगा into 10 to the power of minus 2. यानी this will be 12.27 into 10 to the power of minus 12 meters. Very good. आ गया. Tell me the de Broglie wavelength for the neutron beta in terms of Boltzmann's constant. याद है? क्वेश्चन है लिख रहा. de Broglie's wavelength. थर्मल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितनी होती है बेटा? थर्मल एनर्जी मैंने पढ़वाया था मैंने ऑफ न्यूट्रॉन, एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन is equals to 3/2 times of k into t. याद है? de Broglie wavelength is lambda is equals to h by p, isn't it? Or that is equals to your h divided by under root of 2m into your energy E. Or that is equals to your h divided by under root of your 2 into your m. Energy will be equal to 3/2 times of k into t. यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 gets cancelled. So de Broglie's wavelength will be equal to your h divided by under root of your 2m. 2 और 2 gets cancelled ना बेटा, sorry. तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पर? 3m kt. This will be the answer. De Broglie's wavelength lambda is equals to your h divided by under root of 2m into your kt. Clear? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, if the mass of neutron is 1.7 into 10 to the power of minus 27 kg, then the de Broglie wavelength of neutron of energy 3 electron volt is, in the bracket, H value is 6.6 into 10 to the power of minus 34 joule second. That is given. Try करिए. Options are, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, 1.4 into 10 to the power of minus 11 meters, 1.6 into 10 to the power of minus 10 meters, 1.65 into 10 to the power of minus 11 meters, and 1.4 into 10 to the power of minus 10 meters. Conversions वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टॉपिक पे. Mass of electron दे रखा है 1.7 into 10 to the power of minus 27. Energy in terms of electron volts is so directly you can remember this formula better. Lambda is equals to 0.286 divided by under root of your energy in electron volt. इसको डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा. Unit will be angstroms. 0.286 divided by root of your 3. डायरेक्टली एनर्जी भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, सो इट इज योर एंगस्ट्रॉम्स. इसको देख लीजिए, आंसर आ जाएगा. ऑप्शन 3 आ गया. वेरी गुड. 1.65 into 10 to the power of minus 11 meters. आज आप लोग इसके इस टॉपिक के पीवाईक्यूज कर लो बेटा, किसी हाल में भी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. If the kinetic energy of the particle is increased to 16 times its previous value, 16 times its previous value, the percentage change in the de Broglie wavelength, the percentage change in de Broglie wavelength of particle is, de Broglie wavelength of particle is. चलिए बताइए. फर्स्ट ऑप्शन इज 25, सेकंड ऑप्शन इज 75, थर्ड ऑप्शन इज 60 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 50. ये तो आप लोग करना है डायरेक्ट क्वेश्चन. If the kinetic energy of the particle is increased to 16 times its previous value, the percentage change in the de Broglie wavelength of the particle is how much? 1 मिनट का टाइम ले लीजिए. ऑप्शन 2 आ रहा है. क्या करें बेटा? De Broglie wavelength is equal to how much beta? H divided by under root of your 2m into your kinetic energy. है कि नहीं? Very good. Lambda 1 divided by lambda 2 is equals to under root of K2 divided by K1. That is equals to K2 कितना increase हुआ? 16 times of previous value ना. 16K divided by K gets cancelled. Root 16 will be equal to 4. 4 by 1. परसेंटेज कैसे निकालोगे? कभी भी परसेंटेज निकालने के लिए बोला था मैंने, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल.
फाइनल वैल्यू मतलब लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1 into 100, isn't it? तो यहाँ पर कितना है मेरे पास, लैम्बडा 1 बाई लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू 4, यानी लैम्बडा 1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ लैम्बडा 2. तो परसेंटेज चेंज पूछ रहा है ना. So it is lambda 2 minus lambda 1 is 4 times of lambda 2 divided by lambda 1. तो सबको lambda 1 में कन्वर्ट कर दो. lambda 2 will be equal to, ये कितना हो जाएगा, lambda 1 divided by 4. So that is equals to your lambda 1 divided by 4 minus lambda 1 divided by lambda 1. Everyone lambda will get cancelled. So it is 1 by 4 minus 1 into your 100. 1 by 4 minus 1 is how much better? 3 by 4. 3 by 4 into 100. 3 by 4 is how much value? 75%. आ गया? Very good. Okay. आप लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स की भी क्लास सुन रहे हो बेटा साइमल्टेनियसली शाम में? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 मिनट से कम टाइम है मेरे पास, जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए. एन अल्फा पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ. An alpha particle moves in a circular path of radius 0.83 centimeters in presence of magnetic field. In presence of magnetic field of 0.25 Weber per meter square. So stop. The de Broglie's wavelength will be, the de Broglie wavelength associated, the de Broglie wavelength associated with the particle will be, first option 1 angstroms, second one 0.1 angstrom, 10 angstroms, fourth one is 0.01 angstroms.